I will try not to take long, maybe half an hour. اور کوئی ہے اس طرف؟ جواب تو آپ دے ہوئے. آپ کس کی طرف سے ہیں؟ نہیں, do you want to add anything or not? کتنا ٹائم لیں گے؟ آپ فینا پاشا صاحب آپ کتنا لیں گے؟ اور آپ کس کے لیے کامران صاحب؟ My lord, I'm Zaman Wardak, petitioner in Constitution Petition number 10, my lord. I have already submitted my concise statement, my lord, and I will not take the time of for this August court. And I rely on that my concise statement, which has been submitted through CMA 3212. Those are days. جو کل آپ نے فائل کی وہ میں نے پڑھ لی, وہی والی. My lord. اچھا. Thank you very much, sir. اچھا, can we request you that on the next date of hearing, if you can come here to Islam Abad? Mr. Wardak. آپ کس کے لیے ہیں؟ I'm in Constitution Petition number 18. آپ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے. اچھا نہیں, آپ تھوڑی زحمت کیجئے, آپ اسلام آباد آئیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو زیادہ کوئٹہ اور کراچی کے لیے, اسلام آباد از ویری 3-4 گھنٹے کا ڈرائیو ہے, یہ آپ آئیے, مزہ نہیں آتا ہے. اچھا, یہ اگر آپ لوگ دیکھیں, ہم نے کوشش کی کہ اس کو ختم کریں, مگر لگ رہا ہے آج ممکن نہیں ہے. اور آپ کی بھی ویلڈ بات ہے کہ بہت سارے سوال اٹھیں, آپ ان کا جواب دینا چاہیں, فیئر انف. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا فوراً جواب نہ دیں, جیسے وہ آپ کے ساتھی دے رہے تھے, میں نے کہا پھنس جائیں گے, آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں. تو وہ ایک جگہ پھنس بھی گئے, تو وہ تسلی سے آپ جواب دے دیں. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں میری جو ذاتی طور پہ تھی کہ جی ایک قانون ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 لوگوں سے مشاورت کروں, ٹھیک ہے, وہ میرے سامنے آ رہا تھا. اب میں نے ڈیورنگ دا انٹرول اپنے دونوں ساتھیوں سے آن مائی رائٹ اینڈ مائی لیفٹ, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم سے مشاورت کر لیں, کوئی یہ تو ممانعت ویسے بھی نہیں دیتا ہے, اگر آپ ایسے بھی کرنا چاہیں تو آپ اگری کرتے ہیں؟ آپ اگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کریں گے, پھر ہم اس کو پارٹھڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اٹارنی جنرل بھی آ جائیں گے, کیونکہ آج آئی ایم شیور ہی مسٹ ہیو بین اسٹریسڈ تھنکنگ آف مور امپورٹنٹ میٹرز. آپ بھی مزید جو جتنے سوالات اٹھے ہیں آپ ان کے بھی جواب دے دیجئے. تو اب میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آج کا آرڈر ہم ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. لکھیے کون ہے. We've heard the learned counsel, we partly heard the learned counsel for the petitioners in civil petition petition number 8. کون سے ہیں آپ کے؟ 6, 7 and 10. 6, 7 and 10. 12, sir. Sorry, 12. 6, 7 and 12. آپ کس میں ہیں صدیقی صاحب؟ 6, 7 and 12. ٹھیک ہے, دونوں کور ہو گئے. We've also heard the learned Attorney General for Pakistan stated that he has to attend to a very important meeting in Vienna regarding the Indus Water Treaty, and requested that he may be heard, after which we allowed, but he wanted more time, and a number of queries were also addressed by the bench and the learned counsel for the petitioners, namely Khwaja Sahab and Mr. Imtiaz Siddiqui, requested to submit legal replies thereto. The Attorney General was also asked questions, and he too sought time to submit legal replies to the queries raised by the bench. Full stop. اب آپ اگلا پیراگراف لکھ دیں. 2 اس میں میرا لکھ دیں. کیسے لکھیں؟ ٹھیک ہے, اب میں اپنا لکھ دیتا ہوں. چیف جسٹس stated that in view of the challenge thrown to the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023,
and as the matter is pending adjudication, he will be consulting with his two senior colleagues with regard to the constitution of benches. Honorable Senior Puny Judge Justice Sardar Tariq Masood agrees, and so too Justice Ijazul Ehsan. ठीक है, तो ये हम अपने तौर पे करेंगे और अब आप डेट प्रपोज कर दें. सर आपने जो अपने तौर पे किया है एग्जैक्टली मैं ही ये कह रहा था, आप अपने तौर पे ये कर लीजिए. कर लेंगे ना, ये तो मैं चाहता था भाई. आपने तो मेरा काम आसान कर दिया. हजूर, हम आपके सब चीजें खुली अदालत में होना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी आपको पता होना चाहिए. और जो मेरे बहुत ही मोहतरम आप बता दें डेट, उनकी जो बातें हैं कि वापसी कब है उनकी, कुछ पता है आपको? My lord, he will be back on Sunday जी. He will be arriving. अक्टूबर में कोई डेट रख लें. जी रख लें. सेकेंड अक्टूबर क्या बनती है? ठीक है, सेकेंड काफी आपको टाइम मिलेगा, आपसे ज्यादा टाइम मिलेगा. adjourn to 2 अक्टूबर, मगर वो हमें पहले से दे दें. The replies, if any, that are to be filed should be filed by कब सर? Everybody should find the written thing. ठीक है, जो भी करना चाहे. A week before the dates. नहीं, हम डेट देख लेते हैं ना, अभी कौन सा महीना? 25 कर दीजिए. हाँ, 25 सितंबर. आज क्या? आज 18 है जी. 18th है. ठीक है, 25 ठीक है. 25 जैसे आप चाहें. ठीक है, तो आपसे तो हफ्ता दे दिया आपने, 2 दिन मांगे थे. आपने बहुत ठीक है, मिस्टर बंदारी. जी, that's fine जी. That's fine with me. In fact, if your lordship can just note, I have already filed my concise statements. No, if you don't want to, don't file anything more. I've already filed. I'll supplement that if you want to. in order to try and address If you want to, it's not a mandatory. You've also heard the questions. If you have a better reply, maybe you come up with a better reply. I'll try my best. ठीक है, so अच्छा इसमें लिख दें, all parties oblique counsel may file replies. Already order हुआ है जी पहले. हुआ है. May additional reply. May avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. ठीक है. So now it will be adjourned. अच्छा, next date पे हम adjourn करेंगे. We'll give a full date of this hearing then. You know, थोड़े करें, बात सुनें, or we'll decide it amongst ourselves, the three of us. ठीक है. ठीक है. Thank you very much. जी. Your Lordship has हाँ, अच्छा शुरू में वो लिख दें, वो जो आपकी CMA हमने कुछ तो अलाउ भी कर दी, वो फुल कोर्ट हो गया ना. एक सेकंड. CMA 4207 कितने पाकिस्तान बार काउंसिल की CMA 2023. एक सेकंड. और ठीक है, ये आपकी है ना पाकिस्तान बार. अच्छा, और दूसरी है CMA 3163 नहीं 31. एक सेकंड. हाँ, 31 CMA 3166 2023 and CMA 3199 2023. ये शुरू में लिख दीजिएगा. Through these applications, request for full court was made. However, the full court has been constituted. The learned counsel for the petitioners have no objection to the constitution of the full court. The applications are disposed of as allowed. ठीक है? नहीं ठीक है. Any problems? No problem, sir. We are grateful. I'm very grateful that जो मैं चाहता था वो आपने पहले कर दिया, और जो वो अपने मेरे दोस्त चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपने कर दिया है. बाकी काम जो रीडिंग डाउन का सेक्शन 3 और 4 है इंशाअल्लाह मैं आपको करूँगा. अच्छा, ये भी देख लेना. देखिए, अगर आप कुछ इसको बचा सकते हैं, अगर एक तो होता है ना, आप रिजिड पोजीशन ले लें कि मैं किसी सूरत में इतना जरूर कहूँगा जी. एक ऑर्डर था, नहीं आप उसको देख लीजिए, अभी ना करें. एक सुन लीजिए गुजारिश. जी जरूर. जो हम 24 करोड़ अवाम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इतना मुत्तफिक हूँ कोई इंसान नहीं. आई हैव बीन अ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स माई सेल्फ way back in 1988. At that time, I had the burden
of a martial law which had just been lifted. And I knew that. I will only say this thing that there was an order कि जो proceedings हुई हैं and how many members participated in the voting of this bill. अगर वो proceedings आपके सामने आ जाएं तो मेरा काम कुछ 24 करोड़ से शायद 2 करोड़ पे आ जाएगा. आपने हमें 2-3 प्रोविजन वो मंगवा दी. नहीं, आपने 2-3 प्रोविजन, ये आपका आर्गुमेंट को कमजोर इसलिए कर देगा क्योंकि आपने कहा कि ये आप काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. अब हम उनके काम देख रहे हैं, आपने कहा जो हमें नहीं करना चाहिए. ये डिस्पेल करना चाहिए. ये मगर आपका आर्गुमेंट कमजोर हो जाएगा. मैं सर ये डिस्पेल करना चाहता हूँ कि आपके मैं आर्गुमेंट से मुत्तफिक हूँ कि 24 करोड़ आवाम का ख्याल रखना चाहिए. नहीं, इसीलिए अगर मैं उसको बढ़ाऊं, इसीलिए बेंचेस. अच्छा, अब सॉरी, आई नो इट्स वेरी लेट. आई वुड रिक्वेस्ट माय लर्नेड कलीग्स, अभी हम कर रहे नहीं कि ऐसे बेंचेस लगाएंगे जिसमें इस्लामाबाद एक वकील हों और छोटे केसेस हों जो कि क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे होंगे ना, अब कल बेंचेस बनेंगी. ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन. थैंक यू सर. एक सबमिशन कर दूं सर. ठीक है, ओके. ऐसे ख्वाजा साहब आप 2 दिन आगे कर सकते हैं. यू आर राइट. ख्वाजा साहब आप आर्टिकल 69 पढ़ लें, वो आपका जवाब मिल जाएगा. चलिए, एक्चुअली माय मैं आपको सेटिस्फाई नहीं, एक सेकंड, सिर्फ आप लोग बुरा ना माने, आई वुड लव टू हियर इट, बट अब देखें वक्त है, बहुत केसेस हैं, तो प्रिसाइज जितना हो सके. आपको 2 के बजाय 3 कर रहे हैं डेट, क्योंकि वो 3 अक्टूबर कर रहे हैं. ओके सर, ठीक है, वो डेट बदल दीजिए ट्यूसडे. यस सर, ये जो ख्वाजा साहब ने बात की, एक्चुअली आपने ऑर्डर एक फरमाया हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब को डायरेक्शन दी हुई है, रिकॉर्ड है वो पार्लियामेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो पेश किया जाए, जो अभी तक according to the best of my knowledge has not been produced. There has already been an order. अच्छा, मैं एक चीज आपको सिर्फ बता दूं, देखें, हमें एक दूसरे की कदर करना चाहिए. Absolutely. Can I go and peep into your file? No sir, this is not the case. एक सेकंड ठहरिए ना. देखिए, can I go and to peep into your file? You will say it's privileged communication between me and my client. ठीक है? Can I ask you how much your client has paid you? ठीक है? This is also privileged. ठहर जाइए ना. तो अब अटॉर्नी जनरल की कौन सा पावर इस्तेमाल करेंगे टू डू दिस? मतलब इस चीजों में फंस जाएंगे. अदालत का ऑर्डर, अदालत का अगर ऑर्डर है तो वो कर देंगे कंप्लाई. मुझे नहीं पता क्या करेंगे. अदालत का ऑर्डर है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है. अच्छा, एक बात वजाहत कर दी वर्दक साहब, आपको यहाँ आना होगा. लाहौर से बैठ के वीडियो लिंक नहीं देंगे आपको. जी बिल्कुल ठीक है सर. ठीक है, आपके साथी को भी बता दीजिए. ठीक है, we noted sir. चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका. चल, my lord, वो है ऑलरेडी रिकॉर्ड.